So dear students, today we'll talk about primary immunodeficiency. So प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी में सबसे पहले हमारे पास है डिजार्ज सिंड्रोम। डिजार्ज सिंड्रोम जो होता है इसमें थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच होता है वो डेवलप नहीं होता, यानी डेवलपमेंटल फेलियर ऑफ थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच, जो थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच हैं ये जो है डेवलप नहीं होता। सो थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच रिमेंबर ये जो है डेवलप नहीं होता। अब थर्ड एंड फोर्थ जो फेरेंजियल पाउच हैं इनसे कौन कौन से पार्ट्स जो हैं बॉडी के निकलते हैं तो वो जो है इफेक्ट होंगे और उस हिसाब से क्लिनिकल फीचर जो है हमारे पास आएंगे। अब इसमें सबसे पहले मसला कहाँ पे होता है, जेनेटिकली जो है ड्यू टू 26q11 माइक्रो डिलीशन। तो इसमें माइक्रो डिलीशन होती है 26q11 क्रोमोसोम की। तो इसमें प्रेजेंट विद टी सेल डिफिशियंसी होगी, लेक ऑफ थैमस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को सबसे पहले आप लोग देख ले। थैमस जो होता है इट गिव राइज टू थर्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम थर्ड फेरेंजियल पाउच। जो थर्ड फेरेंजियल पाउच है थैमस वहाँ से निकलता है। सो थैमस इज बिकॉज ऑफ थर्ड फेरेंजियल पाउच फेलियर। ठीक है, थैमस डिफिशियंसी या थैमस जो है डेवलप नहीं होता क्योंकि थर्ड फेरेंजियल पाउच जो है इट इज नॉट डेवलप। इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड थर्ड फेरेंजियल पाउच से निकलते हैं और सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड ये फोर्थ फेरेंजियल पाउच से निकलते हैं। तो ये थैमस, इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड और सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड ये थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच से निकलते हैं। तो यहाँ पर थैमस जो है नहीं होगा क्योंकि थर्ड फेरेंजियल पाउच जो है डेवलप नहीं होता। और हमारे पास इसके अलावा पैराथायराइड जो होते हैं वो नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच जो है नहीं है। और इसके अलावा जो है एबनॉर्मेलिटीज होंगे हार्ट के अंदर, ग्रेट वेसल के अंदर और फेस के अंदर। तो एक बार फिर इस चीज़ को देख ले, तो जब लेक ऑफ थैमस होगा तो इस वजह से टी सेल की डिफिशियंसी होगी क्योंकि थैमस के अंदर जो है टी सेल जो है मैच्योर होते हैं, बोन मेरो के अंदर टी सेल प्रोड्यूस होते हैं और थैमस के अंदर जो है वो स्कूल पढ़ते हैं, यानी वहाँ पर क्या होते हैं मैच्योर होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो है अगर नहीं बनती तो हमारे पास क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा क्योंकि पीटीएच जो होते हैं इंक्रीज करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इफ पीटीएच इज लो और एब्सेंट देन द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी और इन द प्लाज्मा विल आल्सो बी लो। सो टी सेल डिफिशियंसी एंड हाइपोकैल्सीमिया दीज टू फीचर विल बी प्रेजेंट। इसके अलावा हार्ट के अंदर एबनॉर्मलिटीज, ग्रेट वेसल और फेस के अंदर एबनॉर्मलिटीज मौजूद होंगे। सो दिस इज द डिजार्ज सिंड्रोम इन विच वी हैव द फेलियर ऑफ थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच। It is due to 22q11 microdeletion and that is present with T cell deficiency, that is because of lack of thymus, hypocalcemia because of a lack of parathyroid, and abnormalities of heart, great vessel and face also occur. Then we have severe combined immunodeficiency, which is represented by in short form by SCID. SCID means severe combined immunodeficiency. So in this case, what is actually the problem is that defective cell-mediated and humoral immunity. So in this case, the cell-mediated and humoral immunity is defective. And what are the different causes that include? Etiologies include cytokine receptor defect. Cytokine signaling is necessary for proliferation and maturation of B cell and T cell. So what actually the cytokine signal is? This is necessary for the B and T cell maturation. So if cytokine receptors are defective, then cytokine signaling will not occur and the T and B cell will not mature. Then we have adenosine deaminase deficiency, ADA deficiency. So what is the function of ADA? First of all, you should know that ADA is necessary to deaminate adenosine and deoxyadenosine for excretion as a waste product. So ADA is, what is the function of ADA? It is necessary to deaminate. When these are deaminated, which thing, adenosine and deoxyadenosine, then the excretion of these occur as a waste product, and buildup of adenosine and deoxyadenosine is a toxic to lymphocyte. So actually what we should do, we should remove adenosine and deoxyadenosine from the body. And when we are able to remove, when ADA deaminate these adenosine and deadenosine. So when ADA, which is adenosine deaminate adenosine and deoxyadenosine, then the adenosine and deoxyadenosine are excreted from the body as a waste product. Okay, then buildup of, because the buildup of adenosine is a toxic to lymphocyte. So as from the name, it is clear that it is deaminating the adenosine. So it is adenosine deaminase. So when the deficiency of adenosine deaminase occur, adenosine and deoxyadenosine will not be deaminated, not be excreted from the body as a waste product. So the accumulation of adenosine and deoxyadenosine will occur in the body, and that will be toxic to lymphocyte. Again, this will disturb the immunity because lymphocytes are defective, or these are damaged. Then we have MHC class 2 deficiency. So MHC class 2, which are which are related to CD4 T cell. These are, when deficient, then the signaling will not occur, activation of CD4 T cell will be defective, and thus the immunity will be defective. So MHC class 2 is necessary for CD4 helper T cell activation and cytokine production. So when MHC class 2 activate the CD4 T cell, then the CD4 T cell produce cytokine. But when this is deficient, that MHC class 2 is deficient, then MHC class 2 deficiency will
cause the no activation of CD4 helper T cell, and thus there will be no production of cytokines. So overall there are different causes, and all these causes make the human body less immune. So the immunity, overall the immunity is defective, and that is, it is called a severe combined immunodeficiency because it can have many causes, and overall the effect is that it causes deficiency of immunity. So what will actually happen if the immune system is weak? Then the different problems will occur that include infections. So many infection, a lot of infection will occur that is characterized by sensitivity to fungal infection, viral, bacterial, and protozoal infection, in opportunistic infection, and the live vaccines. So it is actually like a HIV patient that become immunocompromised. So in this case also immunocompromisation occur, and that's why different type of bacteria, viruses, protozoal infection, and fungal etc. This cause problem in this patient. What is the treatment plan for this patient? That is, the treatment is sterile isolation, that is bubble baby, and stem cell transplantation, so that new cells are produced. So this is the severe combined immunodeficiency. Then we have X-linked agammaglobulinemia. Agammaglobulinemia mean that there is no hemoglobin, so complete lack of hemoglobin, and the cause of this is disordered B cell maturation. So when B cells are not mature, then it will not produce antibodies. So immunoglobulin are antibodies that are not produced because of the B cell. So normally we know that B cell get mature into the plasma cell that produce antibodies, but when the B cell is not mature, then it will not produce immunoglobulin, and that is causing agammaglobulinemia. So pre and pro B cell cannot mature. So the pre and pro B cell are unable to mature. That is why immunoglobulin are not produced. So actually it is due to mutated Bruton tyrosine kinase, that is X-linked disease, and that is because of a Bruton tyrosine kinase mutation. So mutation occur in the Bruton tyrosine kinase producing gene, that is abnormal Bruton tyrosine kinase, and this causes agammaglobulinemia. Okay, so in this case, agammaglobulinemia will occur. So after 6 months of life with recurrent bacterial infection, enteroviruses, that polio and Coxsackie B viruses, and Giardia-Lindley infection, maternal antibodies present during the first 6 months of life are protective. So इसमें क्या होता है, ये जो पेशेंट होते हैं ये 6 माह के बाद जो है उनको सिम्टम्स जाहिर होते हैं, और उसकी वजह है कि लाइफ के जो पहले 6 मंथ होते हैं उसमें माँ की तरफ से जो आने वाले एंटीबॉडीज होते हैं वो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं. तो फर्स्ट 6 मंथ में एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इन द बेबी that has come from the mother, but after 6 months these antibodies are finished, then sign and symptoms of agammaglobulinemia occur. So this is the case. Then we have live vaccine, that polio must be avoided. So in this case polio vaccine should not be given because it may cause problem, because it does not have antibodies. So live vaccine which are polio should not be given. This should be avoided. Then we have common variable immunodeficiency, that is CVID, common variable immunodeficiency. So in this case we have low immunoglobulin. In both case we have no immunoglobulin, but in this case we have low due to B cell or helper T cell defect. So this is less severe because it has still some immunoglobulin. But in this case we have increased risk of bacterial, enterovirus, and Giardia-Lindley infection, usually in the late childhood. Increased risk of autoimmune disease and lymphoma also occur in this. So this is the combined common variable immunodeficiencies. Then we have IgA deficiency. So in this case we have serum and mucosal IgA low level. So level of IgA in the serum and mucosal IgA will be decreased. Most common immunoglobulin deficiency is IgA deficiency. So this is important to know कि सबसे कॉमन जो है इम्यूनोग्लोबुलिन डिफिशियंसी कौन सी है, तो वो है आईजीए की डिफिशियंसी, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है डिफरेंट एंटीबॉडीज, इनमें सबसे कॉमन जो है वो है आईजीए की डिफिशियंसी. तो आईजीए की डिफिशियंसी जो कि आईजीए म्यूकोजल में होते हैं, वहाँ पर नहीं तो म्यूकोजल इन्फेक्शन, खासकर वायरल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. However, most patients are asymptomatic. So IgA डिफिशियंसी में अक्सर पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन अक्सर जो है म्यूकोजल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं. Then we have hyper IgM syndrome. It is elevated IgM. इस केस में क्या होता है, IgM जो एंटीबॉडीज होते हैं पेंटावेलेंट, ये क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं बॉडी के अंदर. ड्यू टू म्यूटेटेड CD40 ligand on helper T cell और CD40 रिसेप्टर ऑन द B cell. इसमें CD40 ligand जो कि T cell के ऊपर होता है, या CD40 रिसेप्टर जो कि B cell के ऊपर, उसमें म्यूटेशन आ जाती है. सेकंड सिग्नल कैन नॉट बी डिलीवर्ड टू द हेल्पर T cell ड्यूरिंग B cell एक्टिवेशन. तो यहाँ पर असल में जो है ये जो CD40 ligand या CD40 है, ये सेकेंडरी सिग्नल या सेकंड सिग्नल में रोल अदा करते हैं. तो यहाँ पर सेकंड सिग्नल जो है नहीं होता,
रिजल्ट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली साइटोकाइन नेसेसरी फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास स्विचिंग आर नॉट प्रोड्यूस्ड। अच्छा, तो इसमें मसला क्या होता है कि जो साइटोकाइन जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन को क्लास स्विच करते हैं, क्लास स्विचिंग में रोल लगाते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं होते। व्हाट इज क्लास स्विचिंग? तो ये मैंने पहले ही बताया था। फर्स्ट करीब बी सेल आईजीए प्रोड्यूस करते हैं, आईजीजी प्रोड्यूस करता है, आईजीएम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइम वो आईजीएम प्रोड्यूस करता है। अब इस बी सेल को ये बताने के लिए कि अब आईजीएम की बजाय दूसरा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, इसके लिए बी सेल से CD4 सेल से साइटोकाइन्स चाहिए, ताकि वो उस बी सेल को बोले कि अभी जो है आपने आईजीएम की जगह और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है। तो जब ये प्रोसेस होता है कि जो साइटोकाइन्स होते हैं वो आईजी जो बी सेल है उसको ये बोले कि ये आपने चेंज करना है एंटीबॉडी टाइप, तो दैट इज कॉल्ड क्लास स्विचिंग। यानी एंटीबॉडी एक किस्म की एंटीबॉडी को जब बी सेल जो एक किस्म की एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे थे वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो गए, तो उसका क्लास स्विच हो गया, यानी चेंज हो गया। लेकिन अगर CD4 सेल एक्टिवेट नहीं होगा तो क्लास जो साइटोकाइन्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे और इस वजह से फिर क्लास स्विचिंग नहीं होगी और इसके रिजल्ट में सिर्फ आईजीजी जो है आईजीएम सेल जो है प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट इज व्हाई वी एलिवेटेड लेवल ऑफ आईजीएम। लो आईजीए आईजीएन आईजीई रिजल्ट इन रिकरेंट पॉइजनिक इन्फेक्शन। तो अगर आईजीएम सिर्फ प्रोड्यूस होगा तो आईजीए आईजीजी और आईजीई जो है कम होंगी बॉडी के अंदर और इस वजह से रिकरेंट पॉइजनिक इन्फेक्शन होंगे। दैट इज ड्यू टू पुअर ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन भी मैंने आप लोगों को बताया, स्पेशली इन म्यूकोजल साइड। तो हाइपर आईजीएम सिंड्रोम में मसला ये होता है कि जो आईजीएम है सिर्फ ये ज़्यादा होता है, बाकी जो बॉडी की इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होते हैं वो कम होते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाते हैं। देन वी हैव विस्कट-अल्ड्रिच सिंड्रोम characterized by thrombocytopenia, eczema and recurrent infection, that is defective humoral and cellular immunity. Bleeding is a major cause of death and that is due to mutation in the wasp gene, that is X-linked. So इसमें ट्रायड आपने याद रखना है कि एक तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट लेवल कम होंगे, एक्जिमा होगा और बार बार इन्फेक्शन होंगे। इसमें ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो डिफेक्टिव होती हैं और इसमें सबसे कॉमन काज जो है, मेजर काज जो है डेथ का वो है ब्लीडिंग, विस्कट-अल्ड्रिच सिंड्रोम के अंदर, क्योंकि प्लेटलेट का लेवल जो है कम हो जाता है। विस्कट-अल्ड्रिच सिंड्रोम प्लेटलेट का लेवल कम होता है और इन्फेक्शन भी होती है, तो इस वजह से ब्लीडिंग जो होता है ज़्यादा होता है। और इसमें WSP जीन जो होता है उसमें क्या होता है, देयर इज अ म्यूटेशन इन WASP जीन। देन वी हैव कॉम्प्लीमेंट डिफिशिएंसी। अब जो कॉम्प्लीमेंट जो है डिफिशिएंसी हैं दैट आर लेट C5 to C9। सो लेट कॉम्प्लीमेंट डिफिशिएंसीज इंक्रीज रिस्क ऑफ नीजीरिया, गोनीरिया एंड मेनिंजाइटिस। ये आपने याद रखना है कि जो लेट होंगे उसमें नीजीरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हार्ली जो C1 इनहिबिटर डिफिशिएंसी में रिजल्ट इन एंजियोडीमा, दैट इज हेरिडिटरी एंजियोडीमा और विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एडिमा ऑफ द स्किन स्पेशली पेरीऑर्बिटल एंड म्यूकोजल सर्फेसिस। तो जो हमारे पास पहले वाले हैं C1 की उसमें एडिमा होगा और जो आखिरी वाले हैं उसमें नीजीरिया की इन्फेक्शन होंगे। पेरीऑर्बिटल एडिमा दैट इज शोन इन द फिगर 2.3। पेरीऑर्बिटल एडिमा दैट इज एंजियोडीमा दैट इज पेरीऑर्बिटल एडिमा, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्या है, पेरीऑर्बिटल एडिमा है।